Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ख़ित्ते की जो बदलती हुई सूरत हाल है, वो बहुत तेज़ी से बदल रही है और आज जो है तालिबान ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं, उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम उस पर बात करेंगे और हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, तो हम ब्रिगेडियर साहब से पूछेंगे। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। और ब्रिगेडियर साहब, लेट्स गेट टू द पॉइंट कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे तो बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ये लोग तो जो जिस तरह दुनिया सोच रही थी, ये तो उस तरह नहीं है। ये तो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें जा रही हैं। ये तो औरतों के हकूक़ की भी बात कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी विदिन द इस्लामिक लॉज़ ख़वातीन काम भी कर सकती हैं, बाकी इदारे भी काम करेंगे, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिस ममालिक के, वो भी चलते रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो 96 में फिर जो होता रहा है, हमें जो बताते रहे हैं, उसका और अब का बहुत ज़्यादा फ़र्क क्यों लगता है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अफ़गानिस्तान पे आपके साथ 2 प्रोग्राम किए हैं जी, और उन दोनों में मैंने यही कहा था कि तालिबान जो हैं एक बहुत ही मॉडरेट फेस लेके आएँगे, एक इंक्लूसिव फेस लेके आएँगे। अ, जो कल वाला प्रोग्राम था वो तो ख़ैर काबुल के कब्ज़े पर था और कब्ज़ा हो चुका था, लेकिन उससे पहले जो था, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा पहले, उस वक़्त तो कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही थी कि एकदम काबुल पे कब्ज़ा हो जाएगा। उस वक़्त भी मैंने ये कहा था और ना सिर्फ़ ये बल्कि मेरे सैकड़ों में मकाले हैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर, जिनका तसलसल 2007 से है, उसमें भी थ्रू आउट मैं ये मेंटेन करता हूँ। देखें, ये जो प्लान आज दिया है तालिबान के स्पोक्सपर्सन मुजाहिद साहब ने, जी, जी। और the irony of circumstances is, the dramatic irony is that this spokesperson was a detainee at the Guantanamo Bay. राइट। And there he is addressing, and the whole world is watching very keenly what the Taliban have to say. And he is offering friendship, reconciliation, forgiveness. तो इसको कहते हैं मुफाकात अमल. A man who has suffered incarceration, imprisonment, वो कितने खुले दिल के साथ बात कर रहा है और मोहब्बत की बातें कर रहा है। ये मोहब्बत की बातें जो है 1996 में भी इन्होंने की थी, और वो जो पीस अकॉर्ड था नॉर्दर्न अलायंस और अफ़गान तालिबान के दरमियान, उसको नेगोशिएट किया था पाकिस्तान ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर की सरबराही में, और उसमें भी एग्री हुआ था कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनेगी अफ़गानिस्तान में, एक इंक्लूसिव माहौल होगा, पावर शेयरिंग में सब लोग आएंगे और अफ़गानिस्तान में अमन आ जाएगा और अफ़गानिस्तान विल बी ए फेडरेशन। वो प्लान जो था, जब यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय ऑन अफ़गानिस्तान को पेश किया गया कि ये हमने सब कुछ कर लिया है, तो आप अब अमेरिकन्स को इस पे मनवाएं कि वो भी इस प्लान के ऊपर नोट कर लें ताकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो उसका जवाब आया बाद में कि Americans do not agree on this. So the Americans did not agree on that peace plan. फिर पाकिस्तान ने यूनिलैटरली डिसाइड किया that let us brave the odds and General Nasirullah Babar will go to Afghanistan on 5th November 1996 and get this peace accord signed by all the parties, and it will be announced. Unfortunately, on the night 4th and 5th November 1996, Benazir Bhutto was sacked by Because President of Lagari. this, Benazir Bhutto was sacked by President Lagari. this was the reason? This was the reason. And सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जब फॉलो अप हुआ और नेक्स्ट गवर्नमेंट आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो दिस प्लान वाज नेवर फॉलोड अप.
Oh, it was never followed up. So the It was plan never was followed on the up. back burner then. It went into the back burner till it got revived again about a year and a half ago. ठीक. और इसमें तालिबान के बड़े अच्छे अच्छे लोग इन्वॉल्व थे. मतवक्कल साहब इन्वॉल्व थे, मुल्ला उमर का नॉट था, जो पाकिस्तान में एम्बेसडर थे अफगानिस्तान के, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे. एंड हमारे एक डिप्लोमेट होते थे इफ्तिखार मुर्शिद, ही वाज आवर स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे. ऑब्वियसली जो किंग पिन थे वो जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे. तो ये प्लान तो तब भी बन गया था. नाउ इट हैज कम 24 years late. So many people have died. Right. So many women, children, families have vanquished because of daisy cutters, bunker busters, indiscriminate aerial strikes in Afghanistan. इतने ज्यादा डैमेज के बाद कम से कम 3-4 लाख डेथ्स अफगानिस्तानियों की हुई हैं, जिनमें 1,70,000 एक एस्टिमेट है सिर्फ अफगान तालिबान की हुई हैं. 80,000 So, पाकिस्तानियों की. और 70,000-80,000 पाकिस्तानी भी इसमें शामिल आप कर लें आप. So it has been at a tremendous cost, and that is why people like me, we feel very relieved कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे उस जमाने में 24 बरस पहले, अल्टीमेटली हम उन ऑब्जेक्टिव्स के बहुत करीब आ गए हैं. ठीक है ना. हमने वी डू नॉट वांट टू रूल अफगानिस्तान, वी डू नॉट वांट टू dictate any policies to them. All we want is a peaceful neighbor, a prosperous and peaceful neighbor with whom we can do economics, we can do trade, we have cultural exchange with them. ड्यूरन लाइन जो है एक जोग्राफिकल लाइन नहीं है, एक बाउंड्री है बनी हुई. उसके अक्रॉस फैमिलीज डिवाइडेड हैं, वो आपस में मिलें. वो बात ना हो जाके जो कि इंडिया और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री पे हुई है. द फैमिलीज आर डिवाइडेड, दे कांट इवन meet each other. So this is the reason why we feel very accomplished and happy that this has come to pass. And as far as I'm concerned, these peace virtues and the show of a very, very moderate face today by the Afghan spokesperson is a step in the right direction. The people will not like it. The West will not like it. Exactly. They will continue blaming But because they weren't expecting to see that probably. They have lost in the bargain. They have suffered in the bargain. उनकी भी डेथ्स हुई हैं. ठीक. United States of America के soldiers have also sacrificed their life, and now the entire American media, especially CNN, is talking. What for? Why was it done? जब 2008 में जो इंटरनल मीमोस थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि अफगान आर्मी को जो हम बना रहे हैं वो कभी भी लीडरशिप लेवल पर उस लेवल पे नहीं आएगी कि इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके. नॉट ओनली दैट, इन 2014 and 16 अगेन दिस असेसमेंट वाज रिपीटेड दैट अफगान आर्मी विल नॉट बी केपेबल टू डिफेंड इटसेल्फ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. सो द अमेरिकन्स न्यू इट ऑल अलोंग, and the manner in which it has been done, you know, a defeat always has an ugly face. Whether President Joe Biden accepts it or not, but the American media is blurting day in and day out that he tried very hard though in his last worse than Saigon press conference. बड़ा कोशिश करता रहा वो उसको वो करने की, और कहता रहा कि मैंने जो डिसीजन ले लिया है मैं उस पर कायम हूँ और ये सही डिसीजन हमने लिया है कि हमने तो अब फौज को वापस बुलाना था. कल की जो कल की जो it is, as I said in the previous program, it's just a face saving. कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए बहाना बनाना है. It's just a face saving, but the fact is, if they knew it all along that Afghan National Army was not capable of it, why were they hanging around for so long? They could have had a prolonged negotiation. अभी भी हुई है 14 माह 15 माह, इसको 24 महीनों में ले आते, बाकी ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर लेते, नॉट नेसेसरली द अफगान गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जिसको के
अफगान तालिबान रिकग्नाइज नहीं करते थे, लेकिन उनके जो नॉर्दर्न अलायंस के जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनको इसमें कोऑप्ट कर लेते। आई एम श्योर अभी भी किया गया होगा किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। बट एक बड़ा ये जो ट्रेजिक सीन्स हमने देखे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, लोग जहाजों से नीचे गिर रहे हैं ना, पीपल आर फॉलिंग ऑफ द विंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड लुक एट दोस पायलट्स, they are taxiing on the runway with Afghan people running in front of the aircraft. How They don't care about inhuman the it human was, how lives. insensitive it was. That's what it seems like it. They All don't these care about scenes the could human have been lives. avoided. There could have been lots of grace in this withdrawal and retrograde from Afghanistan, and USA would have come out as a very, very strong, morally strong country. But they only went for a military option. और जो एक उन्होंने बता दिया था कि they are going to do, it's going to be the century of the Americans, उसके उसमें वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए और इमोशनली अटैच हो गए, and their research organization and think tanks also did not help because they kept out churning a propaganda instead of research papers, giving a picture which the American administration wanted to see. So there's so many people responsible for this human disaster that the whole world has seen yesterday. The way, people were like cattle in front and the aircraft was taxiing and they're climbing the roofs and the stairs and the escalators and everything. ब्रिगेडियर साहब, It could have been avoided. ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर आपने जो अभी बात की है ना, दैट रेजेस टू मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली। जो आप 96 की हम बात करें कि 96 में दे वांटेड पीस एंड देन अमेरिका डिड नॉट वांट इट, एवरीबडी वाज ऑन द पेज बट यूएस वाज नॉट ऑन द पेज एंड यूएस वांटेड समथिंग एल्स, एंड देन 5 years later we have seen 9/11, and then there is another question that I need to ask. अहमद शाह मसूद जो है वो कत्ल होता है कि राइट बिफोर 9/11, 2 या 3 दिन पहले जो है उसको उसका कत्ल कर दिया जाता है। तो ये जो है ये तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज करती है ये बात कि अगर 96 से हमें जो बताया जाता था कि जिस तरह से कि जी ये तो बड़ी ब्रुटैलिटी करते हैं, बड़े जालिम लोग हैं, खवातीन के साथ ज्यादतियां करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आज जो हम इनका चेहरा देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया 96 में और 2021 में बहुत ज्यादा फर्क है, मीडिया बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, इंटरनेट का दौर है, सिर्फ आपने एक फोन ऑन करना है और आपका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो क्या ये हमसे झूठ बोलते रहे हैं? पहला तो ये सवाल है, और दूसरा ये अहमद शाह मसूद जो कत्ल किया गया उसके बारे में जरा थोड़ा सा बताइए, एंड देन वी विल रैप दिस अप। Let me just go into the sequence of events. These are very important because our story has not been told to the world. The Right. world does not know what actually happened on the other side of the curtain in Afghanistan and Pakistan. The world has not bought our story. The world has not bought the Afghan story at all. So it's very important to link the events. There was bombing in Tanzania, there was bombing in Kenya, there was a bombing in Aden, यमन में। तो सोमालिया में इशू हुआ, उसामा बिन लादेन को ब्लेम किया गया। देन ही वाज डिस्कवर्ड इन सूडान, और एक अमेरिकन है मंसूर एजाज, उसने ब्रोकर की डील कि सूडानीज गवर्नमेंट के साथ कि हम उसामा बिन लादेन को कैद करा देते हैं, अमेरिका को पकड़वा देते हैं। सो ही गेव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। द अमेरिकन्स रिफ्यूज्ड टू arrest him from Sudan. Rather, he was provided C-130s, on which, on invitation of President Rabani, he went into North Afghanistan, Northern Alliance के उधर चला गया। उसके बाद वो उधर ही रहा। जलालाबाद की जो लड़ाई हुई थी उसमें अफगान तालिबान की लड़ाई अल-कायदा से भी हुई थी। This is also to be brought on record. Now, it was a time when Osama bin Laden was trying to find favor with the Afghan Taliban. अपनी तरफ से they arranged, I do not know it, because he had been a CIA asset for a very long period of time. Mm-hmm. Osama bin Laden was a CIA asset for a very long period of time. I have suspicions he was their asset even at the time that they say they killed him. Through some Tunisians and who had links in Belgium or Osara kuch, an interview was arranged in which the camera and the batteries blew up, and Ahmed Shah Masood died during a helicopter evacuation to an Indian hospital in Tajikistan. He died over there. जो critics हैं और जो analysts कहते हैं, this act was done probably on behest of someone. Number one. Number two, Osama bin Laden wanted to get close to the Afghan Taliban.
ही वाज नॉट नेक्स्ट टू देम। और 2 दिन के बाद फिर ये 9/11 हो। जब 9/11 होता है तो देयर वाज नो लिंकेज बिटवीन द अफगान तालिबान एंड उसामा बिन लादेन। ये फिर ज़बरदस्ती बाद में बनाया गया और उसके बाद दे डिटेन्ड हिम और उन्होंने कहा कि हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं किसी इस्लामिक कंट्री को, प्रेफरेबली टर्की को, और इस्लामिक कोर्ट में इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन एक काजी जो है अफगानिस्तान से होगा। ये नेगोशिएशन भी ब्रोकर कराई थी जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने। द फॉरेन मिनिस्टर मतवक्कल केम टू पेशावर to carry out this meeting with the Americans. Americans backed out. They said, what guarantee do we have that Osama bin Laden will be punished in a Qazi court? वो टर्की में बननी थी, and they backed off. जब वो back off हो गए तो then the Afghan Taliban understood कि ये हमारा कोई भी peace overture rule नहीं करेंगे. And people like me who are following the situation, we also understood कि इनका रीजन टर्मोइल क्रिएट करने का अफगानिस्तान में कोई और है। एंड व्हाट वाज दैट रीजन? नाउ जब 9/11 हो गया, इन्होंने इनिशियली एक वॉली फायर की मिसाइलों की अफगानिस्तान में, उसके बाद चुप कर गए और फिर ये अल कायदा को निकालने इराक में चले गए। वहाँ पर बच्चों के दूध के डब्बों का मिल्क फॉर चिल्ड्रन, उसका स्कैंडल हुआ, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का स्कैंडल, द sexed up dossiers that Iraq was the hotbed of Al Qaeda. Nothing was discovered. Nothing. They destroyed Iraq. Yeah. And after destroying Iraq, then they came to destroy Afghanistan. No, in the middle. Main purpose was to sit in the underbelly of China and Russia, and also next to Pakistan, to keep an eye on Pakistan's activities, because our nuclear weapon systems were developing and everything had gone. That was their main purpose. The instability in Afghanistan was a crucial plank of the Pentagon and the United States of America strategy in this region. And I don't think that plan would change. इसको अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खास तौर पर अगर हम देखें तो सिर्फ एक से 2 मिनट में बता दीजिए कि हाउ डू यू सी इट, हाउ डू यू सी दैट हाउ बैडली वेस्ट हैज defeated and their narrative has been defeated, actually it seems like it, क्योंकि CNN वो वहां से coverage कर रही हैं, हर चीज हो रही है वहां पर, कुछ भी हालात बदले नहीं है, हर चीज नॉर्मल है, बच्चियां स्कूलों में जा रही हैं, तमाम चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी चीज जो है वो नॉर्मलिटी से हटकर नहीं हो रही है। बिल्कुल। टुडे आई सॉ क्लिप्स ऑन CNN, राइट, गर्ल्स गोइंग टू स्कूल इन हेरात. The only difference is they are wearing a white headscarf. Yes. Other than that, there was nothing. I've seen women anchor persons, correspondents, Afghani in Kabul on the streets covering today. And they interviewed Suhail Shaheen as well, actually, in the morning today. Yeah. All that. So we have to now have a much stronger narrative to beat that narrative, because that narrative is still there. They're going to discriminate against women. They're going to not allow girls to be educated. They will, by force, marry pretty women in Afghanistan as their wives and keep them as slaves. This is what the Americans were saying yesterday also. All such narratives will keep coming up. Humanitarian, just to create that humanitarian feeling that the Afghan Taliban or the Afghan Mujahideen are ruthless people and they have no respect for women. They are barbarians. They are killers. Okay. ब्रिग साहब, आज का बस यही था, हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना चाहते थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, हमारे नाजरीन को और ज़्यादा बताया, और हम ज़रा पीछे इसलिए लेकर जाना चाहते हैं कि हिस्ट्री का जो है बहुत ज़्यादा कम लोग जो हैं वो जानते हैं, और बड़े जल्दी से हम लोग जो है ना वो जो हिस्ट्री होती है वो भूल जाते हैं।
अभी अफ़गानिस्तान पर सवाल करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता इसको आगे लेकर चलें। मेरा जो अगला प्रोग्राम होगा उसमें हम ज़रूर बात करेंगे जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिनको अमेरिका भी 40,000 के करीब लेके जा रहा है, वहाँ पर जर्मनी भी लेकर जा रहा है। कतर में तो सिर्फ वो ट्रांज़िट करेंगे और इस तरह के मुल्क हैं, फ्रांस लेके जा रहा है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया तकरीबन 450 के करीब लेकर गया है। तो इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? क्या ये जितना भी ब्रेन है, वो जो ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं, क्या ये अब अगली साज़िश ये है ताकि कि इस सब तमाम चीज़ों को निकाल दिया जाए और उसके बाद अफ़गान जो है वो अफ़गानी जो हुकूमत है, वो इसको बिल्कुल भी ऑपरेट ना कर सके? इसके बारे में बात करेंगे, बदलती हुई सूरत-ए-हाल में। लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इनकी गलत पॉलिसी की वजह से और अपने घमंड और गुरूर की वजह से कम से कम 2 से 3 मिलियन लोगों की, मासूम लोगों की जानें जो हैं वो गँवा दी हैं और अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये खित्ता अमन का गहवारा बनेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।